गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम इंटेग्यूमेंट पढ़ रहे थे। इंटेग्यूमेंट में ही डर्मल डेरिवेटिव्स जिसमें हमने स्केल्स पढ़े, और इंटेग्यूमेंट के अंदर ही कलरेशन भी इंटेग्यूमेंट से ही संबंधित होता है, क्योंकि डर्मल डेरिवेटिव्स में ही कलरेशन को हम लेते हैं। बहुत सारी फिशेज जो हैं बहुत अच्छे कलर की पाई जाती हैं, तो उनमें कलर किस प्रकार पाया जाता है, तो ये सब हम जो है कलरेशन में पढ़ेंगे। तो इन फिशेज द कलरेशन इज वेल मार्क्ड. A large number of teal fishes are brightly and brilliantly colored, while others are of more uniform and sober shade. The pattern of coloration, however, relates to the lifestyle of fishes and the functional significance. Generally, the fishes are darker and of their upper surface due to sunlight, while the ventral and lateral side are relatively lighter in coloration. तो ऊपर की साइड जो है अधिकतर, क्योंकि सनलाइट सीधी पड़ती है तो डार्क होती है, और नीचे की लाइट होती है। सम फिशेज लाइक गोल्ड फिश एग्जिबिट एन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली ब्राइट कलर। गोल्ड फिशेज जो है इसमें ऑल ओवर बॉडी जो है ब्राइट कलर की पाई जाती है। केव फिशिंग जो कि गुफाओं में पाई जाती हैं, लिविंग इन टोटल डार्कनेस, हैव लॉस्ट ऑफ द पिगमेंट एंड ग्रोन कलरलेस। क्योंकि ये डार्कनेस में होती है इसलिए इनमें पिगमेंट का लॉस हो जाता है और ये कलरलेस पाई जाती है। तो अब कलर का सोर्स क्या होता है, स्किन के अंदर कलर सोर्सेज क्या है? तो कलरेशन इन फिशेज हैज बीन attribute to the presence of two kinds of special cells, the chromatophores and iridocytes. तो दो सेल्स होती हैं, एक तो क्रोमेटोफोर्स और एक इरिडोसाइट्स। ये जो है कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। द क्रोमेटोफोर्स आर ब्रांच्ड कनेक्टिव टिश्यू सेल located in the dermis either above or below the scales. Chromatophores contain pigments of various kinds of pigment granules which may be carotenoids, melanin, फ्लेविन्स, प्यूरिन्स और टेरिन्स, प्रोफाइरिन्स एंड बाइल पिगमेंट्स बेस्ड अपॉन द कलर ऑफ द पिगमेंट्स। द क्रोमेटोफोर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो क्रोमेटोफोर में जो है कैरोटिनॉइड्स येलो रेड होते हैं, मेलानिन ब्लैक होते हैं, फ्लेविन्स येलो होते हैं और प्यूरिन्स जो है वाइट और सिल्वरी होते हैं। तो फर्स्ट है मेलानोफोर्स। द पिगमेंटरी मटेरियल ऑफ क्रोमेटोफोर्स इज ब्लैक कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। जो ब्लैक कलर के पिगमेंट होते हैं वो मेलानिन कहलाते हैं। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एमिनो एसिड टायरोसिन विच इज कवर्ड इनटू मेलानिन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग एंजाइम टायरोसिन। मेलानिन सो फॉर्म्ड एसोसिएट्स with the cytoplasmic organelle called the melanosome. A brownish black pigment called eumelanin is also sometimes found within the melanophores. Second है iridophores. The pigmentary material in these cells is guanine. इनमें pigmentary material guanine पाया जाता है। Guanine is opaque. ये opaque होता है, whitish और silvery. It is a waste product and is deposited in the form of granules. These granules are opaque and possess great reflecting power so that the iridocytes may also be called the major cells. The crystal of the pigment produce a white or a silvery white appearance and against a background of melanophores impart a blue color of the fish. Third है xanthophores. The pigmentary material of the cell include carotenoids and purines. These white, yellow, orange और red color, ये जो है white और yellow और orange color के पाए जाते हैं। These pigments are abundantly found in plants and the fishes being incapable to synthesize them have to depend upon the plants for a dietary supply of the pigmentary material. The cellular organelle containing pteridines are known as pterinosomes, and the ultramicroscopic vesicles of cell containing carotenoid are called the carotenoid vesicles. इसके बाद है mixed coloration in fishes. Color patterns of a majority of fishes are due to the combined effect of chromatophores containing different kinds of pigmentary granules. Thus, the black and yellow chromatophores together develop green coloration. Likewise, yellow and black and orange and blue may combine separately to provide a brown appearance to the fish. Yellow mixed with black
गिव्स ब्राउन और ब्लैकिश कलरेशन इन फिशेस। तो ये अलग अलग जो है इनमें कलर प्रदान करते हैं। कलर चेंज इन फिशेस, फिशेस में कलर चेंज किस प्रकार से होता है। वेरियस स्पीसीज ऑफ फिश चेंज द पैटर्न ऑफ देयर कलरेशन इन अकॉर्डेंस टू द सराउंडिंग्स इन रिलेशन टू द फेजेज ऑफ देयर बिहेवियर। मतलब इनका जो सराउंडिंग होता है उसके अनुसार ही अपने कलर चेंज करते हैं। सच एन एबिलिटी में बी ऑफ फिजियोलॉजिकल और द मॉर्फोलॉजिकल टाइप। फिजियोलॉजिकल कलर चेंज, as mentioned earlier, the chromatophores may be mono or di or polychromatic, and that these pigments remain normally concentrated in the center of the cells. The pattern of color change occur by the dispersion and that these and such pigment from the perinuclear area to the cellular processes of chromatophores, possibly though ultramicroscopic microtubules and the contained microfilaments. The dispersion brings about the change of coloration. The exact mechanism controlling dispersion is however not known. The rate of physiological color change is limited by the rates of mechanical response of effector organs and of their regulating mechanism. There are however several variations in such rates among the fishes, from few seconds as is fundulus to several days in the anguilla. अब है morphological color change. Morphological color changes involve changes in the quantity of pigment within the fish or its cell. It results in both the increase in the quantity of pigments within each cell and an increase in the number of functional chromatophores as unit area of the integument. Coloration in fishes also varies with age, sex, ill health and even in the emotion. तो ये coloration जो है फिश की एज के साथ, सेक्स के या हेल्थ या उनके इमोशन के साथ भी बदलते रहते हैं. समटाइम देयर इज ए वाइड कलर वेरिएशंस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज एंड दिस मे बी एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर लोकेलिटी. अब है रेगुलेशन ऑफ कलर चेंजेस इन फिशेज. फिशेज में कलर चेंज जो होता है उनका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है. फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ कलर चेंज इन द फिशेज, जिसमें सबसे पहला है टेम्परेचर. The temperature indirectly regulates the coloration in fishes. Generally, the low temperature brings about the darkening effect, while its rise results in the concentration of pigments with consequent lightening of the color. Second है stimulation. External stimuli, either tactile or physical, influence coloration. The former, in general, seems to have an only little influence on the chromatophore system, but the later induce the system extraordinarily. Third है light. Light influence the color change mechanism in two significant ways. The changes brought about by light influencing through routes other than eyes, such as by directly acting upon or through reflective action on chromatophores, are called primary responses, while those regulated by way of eyes are called secondary responses. Fourth है hormonal regulation. The hypophysis exercises control over the distribution of pigments in the chromatophores. After hyposectomy, the pigments become aggregated and the color becomes light of the hypophyseal extract is injected into such a fish. Temporarily, dispersion of the pigment is brought about. In some species, however, hypophysectomy or injection of hypophyseal extract has no effect, or it may be opposite to the cited above. It has been suggested that the melanophores of some fishes do not respond to the hormones, or more than one hormone may be responsible for color change. The most important hypophyseal hormones causing color change in fishes are intermedin and MSH. These hormones cause dispersion of the melanophore pigment, resulting in the darker color. Their absence results in the aggregation of the pigment, causing lighter color. The antagonist of intermedin is W substance. Some endocrinologists believe that melanophore concentrating hormone is produced in the hypothalamus and is transported to hypophysis for storage. Beside hypophyseal hormones,
Adrenaline also extract a powerful concentrating effect on the melanocytes. Some fishes show a change in the color during their reproductive period, while is attributed to gonadal hormones. Thyroxine hormone has also been reported to bring about color change by influencing melanocytes. 5 है neural regulation. The chromatophore of some fishes are richly supplied with nerves. In several of these species, chromatophores are greatly affected by obliterating the nerve supplying a particular area. It is believed that the nerves supplying the chromatophores produce chemical substances called neurohormones, which activate them. Probably there are two kinds of nerve fibers with opposite effects. One type of fiber produces neurohumors causing pigment dispersion, and the other causing is in aggregation. One of these is believed to be acetylcholine and two other similar to adenine. अब है सिग्निफिकेंस ऑफ कलरेशन. कलरेशन का क्या महत्व है? तो कलरेशन इन फिशेज परफॉर्म न्यूमरस एडेप्टिव फंक्शंस एंड इज यूजफुल टू द फिश इन ए वैरायटी ऑफ वेज ऑफ डिस्क्राइबिलिटी. इसके जो सिग्निफिकेंस है उसमें सबसे पहला है कैमोफ्लेज. सम फिशेज आर परमानेंटली कलर टू मैच विद द सराउंडिंग इन विच दे लिव. कुछ फिशेज जो है अपने सराउंडिंग्स के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेती हैं. द डार्कर अपर एंड द लाइटर अंडर surface of a number of fishes are well suited to aquatic condition of water and the brilliant colors of coral reef fishes matching with the similarly colored reef of their water. Many fishes are able to change their color very fast by rearranging pigment in chromatophores. They thus merge with the background and successfully avoid the attention of predators. For example, flat fishes become sandy in sandy bottom. Likewise, surgeon fishes belonging to Acanthuridae change their dark color to the improved matching with their surrounding. Second है disruptive coloration. The color change of such kind produce pattern that confuse the form of the fish. Patches of irregular size, shape and color draw attention of the observer side, while drawing away their attention to the forms which bear them. For example, dark spot frequently seen near the caudal peduncle in Amia chami, etc. थर्ड है कंसीलमेंट एंड डिस्क्यूज. कंसीलमेंट यानी शत्रुओं से छुपना. वेरियस फिश स्पीशीज प्रोड्यूस पैटर्न टू मिमिक विद द सराउंडिंग. अपने सराउंडिंग के अनुसार कलर चेंज कर लेती हैं जिससे शत्रु को भ्रम हो जाता है. सो एज टू अवॉइड प्रेडेटर्स एंड द प्रे. डिस्क्यूज इन इफेक्टेड बाय certain habits of the fish. Leather jacket fish, Amazon leaf fish and the triple tail fish very much resemble a leaf floating in water. Lepidosteius lies motionless near the surface of water, imitating a floating twig of the water. Scorpion fish living among the rocks and coral reefs and weed-like tabs to its head to blend with the background for protection capture of prey. Fourth है aggressive purpose. Coloration is sometimes for aggressive purpose and not for protection, helping to the fish conceal its nearness to the prey. They may be a device to deceive and attract the prey as and the angler fish. Antinarius, it is sluggish in habit and usually hides itself among seaweeds to which it resembles in color pattern. The anterior spine of the first dorsal fin is greatly elongated and provided with a terminal. फिफ्थ है कोटिंग पैटर्न्स. ये जो है कोर्टशिप के लिए मेल फीमेल जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. कलरेशन पैटर्न टू हेल्पफुल इन द सेक्सुअल रिकॉग्निशन इन द मेल डेगनोट races and many cryptodonts are brightly colored in comparison to female with the lighter. Cichlets intensity normal color pattern during their breeding period and silver bellies exhibit well marked variations in patterns of the onset of breeding. 6 है bonding patterns. In some species coloration appears to advertise the presence of the fish instead of concealing. Besides sexual recognition, it may serve a warning to the enemy. The coffler fish, glowfish and the porcupine fish are brightly colored and advise their presence, being very well protected by means of strong spines.
7 है कलर पैटर्न इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज कंसिडर कलर पैटर्न्स इन एज इम्पोर्टेंट character in distinguishing the species. For example, the different species of genera, Channa, Mistus and Bargus can be distinguished by pattern of their species combination pattern. इस प्रकार जो है ये इंटेगुमेंट के डर्मल डेरिवेटिव्स हैं जो कि फिश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इनके द्वारा ये बहुत सारे कार्य जो हैं वो करते हैं। थैंक यू।